ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से बात समझाई, आपने स्टार्टअप की बात की, आपने कृषि के ज़रिए आपसी रिश्ते को और लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद हो, उसके ज़रिए आपने एक छोटा आपको एक जी। मिसाल देता हूँ ना। अम, आप ईस्ट इंडिया के अगर सोचें, हम ईस्ट इंडिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश सब जगह पूरा अगर जगह पूरा एक कर दे, बेसिकली दिस आर बेसिकली एन एग्रो इकोलॉजिकल यूनिट, वास्ट एग्रो इकोलॉजी। आप अगर सोचे पॉलिटिकल बाउंड्री के उस हिसाब से, सो यहाँ मतलब कृषि ज़िंदगी है, कृषि वोट भी है और कृषि हमारा सोच भी है। और हम जितनी कहते हैं कि वी कैन बी लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस इकोनॉमी, बट एंड ऑफ द डे एनीथिंग गोइंग रॉन्ग इन फार्मिंग in terms of fertilizer distribution or what monsoon rain coming right time, even if it gets wrong by 1 week plus minus, then it really challenges us, sometimes plays havoc as well. My question and issue is that that's where we can play simply, for example, sharing of agrometeorological data. Can you imagine how brilliantly you can touch souls and you can make people enthuse about relationship. So that's why I'm sorry I'm bringing that again up to you. नो 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 नो, आपने कृषि ज़िंदगी है ये बात की, और कृषि के साथ साथ क्रिकेट भी ज़िंदगी है, और क्रिकेट को लेकर भी कुछ जो एक फैसले हुए, उसने भी हालात को या जो सेंटीमेंट है उसको बिगाड़ने का काम किया, अगर मैं सही हूँ तो। I think every viewer in this conversation would understand. I think life has really moved. Yes, this was something most unavoidable in an episode, and for us, sadly, it happened with a person called one of our really gifted cricketers, Mustafizur, who is really adored in India. And this is truly a sad episode, but I think we have really gone past that. Sadly, it has made a mark but as I said that there are two ways you can actually look at in a relationship, not only relationship between two individuals. You can keep on harping at your past, but I am a believer and I am a believer in the future. So while past is important, but in order to look at the future, I think you have to step in the future, being mindful of the past, but also taking a bold step and saying that yes, it's new day. So we have to approach that new day with the newness in that. So I would like to look at it that way.